Dead Girls. Rafia Zakaria. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 11, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. They say you cannot tell if a man is a murderer simply by looking at his face. In the case of Bryan Kohberger, this may not be the case. Kohberger was recently charged with the murder of 4 University of Idaho students in their off-campus apartment in Moscow, Idaho. In nearly all the photos taken since his arrest, Kohberger's eyes look flat and dead if there was no soul behind them at all. His arrest comes after over a month of gruesome details of the crime that took place in the early morning hours of November 13, 2022. Around noon that day, the police department in the tiny university town of Moscow, Idaho, were called to an off-campus apartment shared by the 5 female students. When they got there, they found a terrifying scene. The 2 surviving girls who had called the police were hysterical. One fainted and had to be revived by the police, and the other could not be understood. It was only when the police entered the home and went through its 3 floors that they saw that 4 students, 3 girls and 1 boy, had been stabbed to death. The days until Kohberger's arrest were harrowing ones for the students at the University of Idaho, a low-crime environment where police mostly deal with underage drinking and loud parties. The parents of many students were so horrified that they drove to the campus and picked up their children before the semester was over. With a killer on the loose, it appeared to be the smart thing to do. In the meantime, everyone from psychic mediums to astrologers to amateur internet sleuths got into trying to solve the case. It was only when Kohberger was arrested at his parents' home in Pennsylvania, thousands of miles away from Idaho, that speculation about who had killed the students finally came to an end. Victim blaming is endemic. Had the girls locked all their doors? Were they being careful in making sure no one was following them? The details in the probable cause affidavit released to the public are bone-chilling. It reveals how cell phone data allowed the police to conclude that the girls who were killed were deliberately targeted by Kohberger. The sole male victim happened to be staying over for the night. Kohberger's cell phone pinged near the girls' home at least 12 times between August and the November killings. Most of these instances were in the late evening or early morning. It can be assumed from this that Kohberger was watching and stalking the students from outside their home for months before he decided to carry out his heinous plan. The girls, Kaylee Goncalves, Madison Mogan, Xana Kernadal and her boyfriend Ethan Chapin, along with the 2 girls who survived, would have had no idea that they were being watched. According to the affidavit used to arrest him, one of the surviving students whose room was on the main floor of the house heard voices on the 2nd floor, including a female voice saying, "Someone is here." At one point, this girl opened her bedroom door and saw a man clad all in black and wearing a black mask walking toward her. She stood frozen in fear, but somehow the man just walked past her and to the sliding door and out of the house. It was this girl's eyewitness testimony that allowed the police to arrest Kohberger. It appears unlikely that Kohberger knew the girls at all. A PhD student in the criminal justice program at Washington State University, the alleged killer was also a teaching assistant at the campus and was taking classes even after the murders occurred. The fact he was so nonchalantly going about his life after apparently committing a massacre of 4 people is particularly terrifying. The killers of young women seem ubiquitous around the world. Everyone remembers the gruesome barbarity with which Zahir Jaffer murdered Noor McAdam. Despite the fact that he was arrested at the scene and had confessed to killing McAdam, it was only after a long drawn-out trial that he was finally sentenced to death. His parents, who appeared to be busy engineering a cover-up, roam free even today. In the Idaho case too, it was Kohberger's father who appeared to have given refuge to his son. Once the police in Idaho had identified a car that was involved, they tracked it driving from the state in the west of the United States to Pennsylvania in the east. When police pulled the car over, Kohberger was with his father, both of them trying to act like nothing was the matter at all. Murders of women reveal the extent and intensity of misogyny in society.
It is not simply the murdering men that are culpable but an entire system around them that enables cover-ups and exonerations. Even more endemic are all the people still devoted to blaming the victims of the crimes. Had the girls locked all their doors? Were they being careful in making sure no one was following them? Why did the surviving girls take as long as they did to call for help? America or Pakistan, the questions come fast and furious, all of them revealing why such barbarity and cruelty continues to take the lives of women every single day. The focus should be on the crimes and on the question of why, despite religion and civilization, femicide continues to thrive in all corners of the world. These dead young women are a reminder of just how primitive men continue to be, with the urge to kill and control and overpower existing just beneath a thin and porous surface of seeming civility. The killers will be punished, we always hope and pray, and certainly they should be. But it is too late for these innocent dead girls, and it will be too late for others living among us at this very moment unaware of what awaits them. The writer is an attorney teaching constitutional law and political philosophy. Published in Dawn, January 11, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. वो कहते हैं कि आप सिर्फ इसके चेहरे को देखकर ये नहीं बता सकते कि कोई शख्स कातिल है या नहीं। ब्रायन कोबर्गर के मामले में ये मामला नहीं हो सकता है। कोबर्गर पर हाल ही में आइडाहो यूनिवर्सिटी के 4 तालिब इल्मों को मास्को, आइडाहो में उनके ऑफ कैंपस अपार्टमेंट में कत्ल करने का इल्जाम आयद किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ली गई तकरीबन तमाम तस्वीर में कोबर्गर की आंखें फ्लैट और मुर्दा नजर आती हैं, अगर उनके पीछे कोई रूह नहीं थी। उनकी गिरफ्तारी 13 नवंबर 2022 की सुबह सवेरे होने वाले इस जुर्म की 1 माह से ज्यादा की हौलनाक तफसीलात के बाद हुई है। इस दिन दोपहर के आसपास मास्को के छोटे से यूनिवर्सिटी शहर आइडाहो में पुलिस डिपार्टमेंट को कैंपस से बाहर एक अपार्टमेंट में बुलाया गया जिसमें 5 तालिबात शरीक थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें एक खौफनाक मंजर नजर आया। जिंदा बचाने वाली 2 लड़कियां जिन्होंने पुलिस को फोन किया था वो पागल थी, एक बेहोश हो गई थी और पुलिस को उसे जिंदा करना पड़ा था और दूसरी को समझा नहीं जा सका था। जब पुलिस घर में दाखिल हुई और उसकी 3 मंजिलों से गुजरी तो उन्होंने देखा कि 4 तालिब इल्मों, 3 लड़कियों और 1 लड़के को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया गया है। कोबर्गर की गिरफ्तारी से पहले के दिन आइडाहो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए तकलीफदेह थे। एक कम जराइम का माहौल जहां पुलिस ज्यादातर कम उम्र शराब नोशी और ऊंची पार्टियों से निमटती है। बहुत से तालिब इल्मों के वालिदैन इतने खौफजदा थे कि वो कैंपस में चले गए और सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही अपने बच्चों को उठा लिया। ढेले पर एक कातिल के साथ ये करने के लिए होशियार चीज जाहिर होता है। दरियासना, नफ्सियाती जराए से लेकर नजूमियों से लेकर शौकिया इंटरनेट के जासूसों तक हर कोई इस मामले को हल करने की कोशिश में लग गया। ये सिर्फ इस वक्त हुआ जब कोबर्गर को आइडाहो से हजारों मील दूर पेंसिल्वानिया में इसके वालिदैन के घर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बारे में कियास आराइयां बिलाखिर खत्म हो गई कि तलबा को किसने कत्ल किया था। मुतासरीन पर इल्जाम लगाना मकामी है। क्या लड़कियों ने अपने तमाम दरवाजों को बंद कर दिया था? क्या वो इस बात को यकीनी बनाने में मुहतात थे कि कोई भी उनकी पैरवी नहीं कर रहा है? अवाम के लिए जारी करदा मुमकिना वजह के हल्फनामे में तफसीलात हड्डियों को ठंडा करने वाली हैं। इससे पता चलता है कि किस तरह सेल फोन के आदाद और शुमार ने पुलिस को ये नतीजा अखज़ करने की इजाज़त दी कि हलाक होने वाली लड़कियों को जानबूझकर कोबर्गर ने निशाना बनाया था। वाहिद मर्द शिकार रात के लिए रह रहा था। अगस्त और नवंबर के कत्ल आम के दरमियान कोबर्गर का सेल फोन लड़कियों के घर के करीब कम अज कम 12 बार पिंग हुआ। इनमें से ज्यादातर वाकयात देर शाम आज सुबह सवेरे हुए थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोबर्गर अपने घिनौने मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला करने से पहले महीनों तक अपने घर के बाहर से आने वाले तालिब इल्मों को देख रहा था और उनका ताक़ुब कर रहा था। लड़कियां किलीगो नकलविस, मेडिसन मोगिन, जाना किरेंडल और उसके बॉयफ्रेंड एथन चीपिन जिंदा बच जाने वाली 2 लड़कियों के साथ को अंदाजा नहीं था कि उन्हें देखा जा रहा है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किए गए हल्फनामा के मुताबिक
जिंदा बच जाने वाले तालिब इल्मों में से एक, जिसका कमरा घर की मरकजी मंजिल पर था, ने दूसरी मंजिल पर आवाजें सुने, जिसमें एक खातून की आवाज भी शामिल थी, जिसमें कहा गया था, कोई यहाँ है। एक मौके पर उस लड़की ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और देखा कि एक शख्स काले रंग का मास्क पहने उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो खौफ से मुंजमद खड़ी थी, लेकिन किसी तरह वो शख्स उसके पास से गुजरकर स्लाइडिंग दरवाजे और घर से बाहर चला गया। ये इस लड़की की ऐनी शाहिदीन की गवाही थी, जिसने पुलिस को कोबरगर को गिरफ्तार करने की इजाजत दी। ऐसा लगता है कि कोबरगर लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं जानता था। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम में पीएचडी का तालिब इल्म मुबैना कातिल कैंपस में टीचिंग असिस्टेंट भी था और कत्ल के बाद भी क्लासें ले रहा था। हकीकत यह है कि वो बज़ाहिर 4 अफराद के कत्ल आम का इर्तिकाब करने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में बहुत गैर मामूली तौर पर जा रहा था। खास तौर पर खौफनाक है। नौजवान ख्वातीन के कातिल दुनिया भर में हर जगह नजर आते हैं। जाहिर जफर ने जिस वहशियाना बर्बरियत के साथ नूर मुकद्दम को कत्ल किया था, उसे सबको याद है। इस हकीकत के बावजूद कि उसे मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था और उसने मुकद्दम को कत्ल करने का एतराफ किया था, ये एक तवील मुकदमे की समाअत के बाद ही था कि आखिरकार उसे मौत की सजा सुनाई गई। इसके वालिदैन, जो एक कोर अप इंजीनियरिंग में मसरूफ नजर आते हैं, आज भी आजाद घूमते हैं। एडाहो केस में भी ये कोबरगर के वालिद ही थे जिन्होंने अपने बेटे को पनाह दी थी। एक बार जब एडाहो में पुलिस ने एक कार की निशानदेही की थी जो इसमें मुलव्वस थी, तो उन्होंने उसे रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के मगरिब में रियासत से मशरिक में पेंसिल्वानिया तक ड्राइविंग का सुराग लगाया। जब पुलिस ने गाड़ी को खींचा तो कोबरगर अपने वालिद के साथ था। वो दोनों इस तरह काम करने की कोशिश कर रहे थे जैसे कुछ भी मामला नहीं था। औरतों के कत्ल से मुआशरे में औरतों से नफरत की हद और शिद्दत का पता चलता है। ये सिर्फ कत्ल करने वाले मर्द नहीं हैं जो मुजरिम हैं, बल्कि उनके अर्द गिर्द एक पूरा निज़ाम है जो पर्दापोशी और मुआफ़ी को मुमकिन बनाता है। इससे भी ज़्यादा मकामी वो तमाम लोग हैं जो अब भी जराइम के मुतासरीन को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने के लिए वक़्फ़ हैं। क्या लड़कियों ने अपने तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया था? क्या वो इस बात को यकीनी बनाने में मुहतात थे कि कोई भी उनकी पैरवी नहीं कर रहा है? जिंदा बच जाने वाली लड़कियों ने मदद के लिए कॉल करने में इतना वक्त क्यों लिया? अमेरिका हो या पाकिस्तान, सवालात तेजी से और गुस्से में आते हैं। इन सब ने इंकिशाफ किया है कि इस तरह की बर्बरियत और जुल्म हर रोज ख्वातीन की जाने क्यों ले रहा है। इन जराइम और इस सवाल पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए कि मजहब और तहजीब के बावजूद दुनिया के कोने कोने में ख्वातीन का कत्ल आम क्यों जारी है। ये मुर्दा नौजवान ख्वातीन इस बात की याद दहानी कराती हैं कि कदीम मर्द किस तरह जारी हैं, जिसमें कत्ल करने और कंट्रोल करने और काबू पाने की ख्वाहिश है और बज़ाहिर मुहज्जिब होने की एक पुतली और गैर महफूज सतह के नीचे मौजूद है। कातिलों को सजा दी जाएगी, हम हमेशा उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं, और यकीनी तौर पर वो होना चाहिए। लेकिन इन मासूम मुर्दा लड़कियों के लिए बहुत देर हो चुकी है और इस वक्त हमारे दरमियान रहने वाले दूसरों के लिए बहुत देर हो जाएगी जो उनके मुंतज़िर हैं। मज़मून निगार आईनी कानून और सियासी फ़लसफ़े की तालीम देने वाले वकील हैं। डान अखबार में शाये शुदा 11 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.